Friends, good morning. Welcome to my channel at Music and Fitness. So today is 30th August. Happy Raksha Bandhan, Shivani and Pooja, my sisters. So as you can see, I am starting my today's cycling challenge of 50 kilometers organized by Giant Brand. It's 15 past 6 early morning. The sun is about to rise and I'm starting my ride at half past 6. So on midway at about 25 kilometers, what I have decided is that I'll be shooting a short video of pros and cons, cycling accessories, what you should do if you are a regular cyclist doing more than 20-kilometer regular cycling. So all those I'm going to capture for you. You can go through the video and get some idea on that. So stay tuned and let me know how do you find the information provided in this video. Like it, hit the like button, share with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel if you have not done so. Thank you so much. Hi friends, welcome back. So I am midway of my riding 50 kilometers. I have completed 27 of them. Look at the location where I am standing right now. It's on the Narmada Canal in Ahmedabad. You can see the sun is rising. It's a scenic location for photo shoot. 22 or 23 more kilometers to go when I go back home. Now I am going to tell you some things if you are riding more than 20 kilometers. What are the things you should carry? What are the accessories? How you should ride? So all this I will cover in 5 or 10 minutes. Stay tuned. So let's start. So first and foremost thing, you need a good cycle. So मार्केट में 3 टाइप की साइकिल आती है. इसको रोड बाइक बोलते हैं क्योंकि इसको मैं रोड पे यूज करता हूँ. एंड आई ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस 130, 140, 150 किलोमीटर. सो इफ यू आर डूइंग रोड बाइकिंग देन गो फॉर अ रोड बाइक. रोड बाइक के टायर्स पतले होते हैं, लाइट वेट होती है. जैसे ये साइकिल 7 kg वेट करती है ओनली. इट इज़ अ गियर साइकिल. आई प्रीफर फॉर people who are doing starting or have started road biking, go for a geared cycle. क्योंकि आपको लंबी दूरी पे जाना है तो you should have a light weight and geared cycle. That's what I prefer and I suggest. दूसरी होती है हाइब्रिड बाइक जिसके टायर्स और वेट इससे थोड़ा ज़्यादा होता है. टायर थोड़े ठीक होते हैं क्योंकि हाइब्रिड है तो आप थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो. और तीसरी होती है माउंटेन बाइक के टायर्स एकदम ठीक होते हैं और थोड़ी और ज़्यादा वेट वाली होती है. आपको कम्प्लीटली ऑफ रोड जाना है या माउंटेन्स पे जाना है, देन यू गो फॉर अ माउंटेन बाइक. बट टुडे वी विल टॉक अबाउट रोड बाइकिंग. सो वी विल टॉक अबाउट दिस साइकिल एंड एसेसरीज एंड प्रोज एंड कॉन्स. के साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बॉडी और हेल्थ और स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट करती है वो है सीट हाइट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली सीट हाइट को एडजस्ट करना है. अगर आपने सीट हाइट कम रख दी तो भी प्रॉब्लम है. अगर आपने सीट हाइट ज़्यादा रख ली तो भी इश्यू है. इट कैन कॉज यू नी पेन, इट कैन कॉज यू मसल स्ट्रेन एंड इट कैन ऑल्सो कॉज यू बैक पेन एंड नेक पेन. तो लो सीट हाइट किसको बोलेंगे? व्हेन यू आर राइडिंग योर साइकिल, अगर आपका पाँव ये पैडल में अगर नीचे जाता है और ऐसे 90 डिग्री पे रहता है, सो दैट मीन्स योर सीट हाइट इज लो. और अगर आपका पैर पूरा खुल जाता है, राइट, ऐसे खुल जाता है तो यहाँ पे स्ट्रेन आएगा. वो भी नहीं करना है आपको. अगर 180 डिग्री हो जाता है वो भी आपको नहीं करना है. तो आपकी हाइट ज़्यादा है. तो आपको क्या करना है कि जब आपका पैडल नीचे हो तो आपका ये जो पीछे का पोर्शन है उसको आप यहाँ पे रखिए. और जब नीचे ये जाएगा तब ये 170 डिग्री तक खुलना चाहिए. दैट इज योर परफेक्ट सीट हाइट. क्योंकि जब आप राइड करोगे तो आपका पैर ऐसे रहेगा, मिड में रहेगा. तो मिड में रहेगा तो इट विल कम एट अराउंड 150 डिग्री और 160 डिग्री. दैट इज द बेस्ट सीट हाइट यू शुड प्रिफर. Now let's discuss what are the accessories I am having on my cycle. So obviously if you are doing a morning ride or night ride, always have 2 lights, one at the front and one at the back. This is a blinking red light so that the vehicle, if it is coming from behind, it can see that okay, there is a cycle in front of me. So just to avoid accident.
this light is going to be used when you are doing a night ride front view के लिए, right? तो एक तो lights है, obviously you need water bottle, then you can have this pouch, इसमें आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं. I also put my phone here and I track my route on this. इसके अलावा I have this odometer. This is called sprint handle. तो अगर आपको स्प्रिंटिंग करनी है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. अदर देन दैट I am also having pressure pump with me. So these are the basic accessories I am having or mounting on my cycle. Talking about the wears or what should we wear. So as you can see, I am wearing these tight clothes. So always wear tight clothes. I prefer the shorts. These shorts are having seat also inside it, so you can have less pressure or issue on your butts. Have a tight t-shirt. If you are doing a night ride, then also go for the safety jacket. It will help you, it will protect you, and the coming vehicles from behind can see, okay, someone is riding in front of them. So have this safety jacket also. Wear gloves. तो आप जब ग्रिप करोगे साइकिल को तो आपको हाथ पे इशू नहीं आएगा. And helmet is always absolutely necessary. And go for these glasses also. And last but not the least is the cycle maintenance, correct? So अगर आपको रेगुलर साइकिलिंग करनी है तो आपकी साइकिल आपको मेंटेन रखनी चाहिए. So always check your tire pressure before starting the cycling. And greasing of your chains is also oiling of your chains, and maintaining of the cycle, maintenance of the cycle chains is also very important. So do that regularly. Go for servicing of your cycle every 3 months or every 6 months at least. Let me know how do you find this video. Like, comment, share with your family and friends. And as I said, don't forget to subscribe to my channel if you have not done so. Thank you so much.